हाँ. हेलो एवरीवन. आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं regarding which programming language should I learn. Now this is the topic that I often come across. Most of the people have the confusion regarding this कि मैं कौन सी लैंग्वेज सीखूं, किससे मेरा करियर ग्रोथ हो सकता है, कौन सी लैंग्वेज मुझे समझने में आसान है जिससे मेरा प्रोग्रामिंग का करियर जो है वो इजीली मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है. Now the thing is that before we start with that lesson, I just want to give introduction about myself. Myself is Jasjeet. I have been into IT field for the last 25 years. I have been teaching various languages. I have been developing programs. I have been developing applications. I have been working with various organizations. Now, during this period, I come across the situations where people ask, where parents come to me and ask that which programming language should my son learn, my daughter should learn, which programming language should be opted as a career growth. Now there is a confusion because there are lot many languages around. We have C, C++, Java, Python, then we have Scala, then we have Kotlin. Now there are herd of languages that is around. Now people get confused that which language to opt for. Now I am not going to discuss about all the languages in this session. I have opted only 3 languages to choose from. To keep the thing simple, to make it understandable to you, I have just specified only 3 options. The first one is the C language, then we have Java, and lastly Python, which is one of the most popular language these days. Now I'll come to these languages one by one, and then we'll discuss about the pros and cons. I will not be going into the technicalities that what is the performance issue, how the things are moving on. I'll be just talking about that which one should be opted and why. Now let us first come to the most popular language today these days, that is Python. Now Python is the most popular language today. Now this is the language that is easiest to learn. It has got the smallest code among the languages that are present today. Python बहुत आसान है, बहुत easily समझ आती है लोगों को, बहुत easily programming उसमें कर सकते हैं. And you can develop a lot of versatile application in the Python language. Second language is the Java programming language. Java programming language is again a very vast language, very versatile language, and open source. Now the difference between Python and Java is that the Java code is quite lengthy as compared to Python. The things that you can do in Python in one line, for Java you have to write 10 to 12 lines. Now next is the C language. Now C language is the fundamental language that one should start programming with. Now C से programming क्यों शुरू करनी है आपने, किस लिए शुरू करनी है? Now reason here is that the C language is the one that is nearest to the computer. सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है. और आज का ये सेशन जो है, इट इज मेनली फॉर द बिगिनर्स. इट इज फॉर द बिगिनर्स एंड आई एम टॉकिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ द बिगिनर्स ओनली. और हर पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एक्सपीरियंस प्रोग्रामर देयर मे बी अ डिफरेंट आंसर, फॉर अ इंटरमीडिएट प्रोग्रामर देयर मे बी अ डिफरेंट आंसर. But when I talk of in perspective of the beginner, then I will choose C language to learn first. Now why C? C is a language that has got a clean code, which is nearest to your system. You can control, you can learn how the computers actually work. You can manage memories. आप कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं. Now this is the language which has got the clean and the shortest code. If I compare it with C++ or Java, C language has got the minimal code, and moreover it is the fastest language as compared to Java or Python. अगर मैं बात करूं कि वो कौन सी लैंग्वेज जो है जिसमें रिजल्ट मुझे जल्दी मिलेगा, प्रोग्राम जो है जल्दी चलेगा, तो वो सी लैंग्वेज है.
Second thing is that the C language has got you give you various options that you understand actually that how the program, how the computer is actually working. Now that thing is missing when we are talking about Java or Python. जावा में आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं, बहुत सा कोड लिख सकते हैं. यू कैन डेवलप वेब एप्लीकेशन, यू कैन डेवलप components, you can develop enterprise application. But the thing is that you have to write lot more code. The coding becomes complex as we compare it with C language. The next thing here is when I talk about Python. Python, as I told you, that it is the simplest language to learn with. It has got the cleanest code. The things that you are doing in Java in 10 lines, you can write the same code in Python in 1 line only. Now, but still, I opt for C language. I'll not be comparing C with Java because I am taking out Java from here because my objective here is to keep the thing simple for the beginner, for the fresher. मेरा ये objective है कि जो fresher है, जिनको knowledge नहीं है बिल्कुल भी, वो कौन सी language से शुरू करें. Java will be difficult for them initially because उनको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा as compared to C. और बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं, बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हैं. सी में चीजें वो सिंपल हैं. आई विल बी कंपेयरिंग सी विद पाइथन. नाउ पाइथन आज की तारीख में बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है. बहुत कुछ आप इसके अंदर कर सकते हैं, बहुत से एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन गूगल सर्च इंजन जो है, इट इज बेस्ड ऑन पाइथन ओनली. तो बहुत सी लैंग्वेजेस, बहुत से एप्लीकेशंस जो हैं पाइथन पे बनी हुई हैं आज की तारीख में, और बहुत सी डिमांड भी है. पीपल आर मूविंग टुवर्ड मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग जैसी एप्लीकेशन जो हैं वो पाइथन में बहुत इजीली हो सकती हैं बिकॉज पाइथन इज समथिंग लाइक, इफ आई कंपेयर पाइथन विद सी, पाइथन जो है इट इज लाइक, अगर आप जैसे बात करें स्कूटी की या स्कूटर की, इफ आई टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल, स्कूटर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले वी वर हैविंग गियर्ड स्कूटर. नाउ वी हैव ऑटोमेटिक ड्राइव स्कूटर जिसमें गियर्स नहीं होते. Now it is easier to drive automatic scooter, but it becomes difficult when you have to switch from an automatic scooter to the geared one. जिसने सारी जिंदगी ऑटोमेटिक स्कूटर चलाया, उसने अगर geared स्कूटर चलाने को दे दिया जाए, it becomes difficult for him. Whereas on the other hand, if somebody is driving the geared scooter and he is given an automatic one, it will be taking few minutes for him to get accustomed to the automatic scooter. Now the reason for this, the same thing is applicable in when I compare C++ or C with Python. अगर आपको C अच्छे से आती है, प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल्स आपका स्ट्रॉन्ग है, तो किसी भी और लैंग्वेज को सीखने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी. अगर आपको C बहुत अच्छे से आती है, यू कैन लर्न द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन इन जस्ट 1 आवर. बट अगर आपको पाइथन बहुत अच्छे से आती है, C अगर आपने सीखनी हो, it may take few days, a couple of days to get used to the C language. The other thing that is about C language is that C language makes you a better programmer. Better programmer in the sense that you become more disciplined, you are able to write better code, and you are able to become a better debugger also. Now, when we say that I want to become a good programmer definition doesn't mean that he has to write code only. One of the fundamental duty is that he has to debug the code also. Now debugging the code comes to you automatically when you start learning C language, because it takes time to get accustomed to the syntax of the C language. It pops up various errors. It is case sensitive. It is type that you have to define that what type of information you are using. Now, when all these things comes together, you write a better code. And when we are talking about better programming, Python does make a good programmer. Python does write a good code. But the thing is that code here is very simple. Now, I give you an example how code is very much simple in Python language. Now, let us take a very example of two beakers or two tumblers. Now I fill one tumbler with the milk and another tumbler with water. मैं 2 टम्बलर 2 ग्लासेस ले लेता हूँ. एक ग्लास के अंदर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने मिल्क फिल किया, दूसरे ग्लास के अंदर आपने वाटर फिल किया. Now I ask you to exchange the two. I ask you
that okay, पानी जो है ग्लास में से निकाल के दूसरे ग्लास में डालना है और उसी ग्लास में जिसमें मिल्क है वो मिल्क निकाल के वापस पानी वाले ग्लास में डालना है. Now when you have to do this thing, now how would you do that? Now when you think about this, आपको ऐसा करने के लिए you need a third glass. Unless you take a third beaker or third glass, you will not be able to swap the liquid in them. You will not be able to exchange the liquid in them. That is quite logical here. And this is how the computer memories work. This is how the computer work. And C language actually teaches you this only. It builds your logic, it builds your development skill, programming skills. But the same thing when I say you have to do it in Python, what you have to do is you have to keep the two things beside each other. दोनों ग्लासेस साथ साथ रख दीजिए and it will be exchanged. Now Python internally, how it is doing it, it might be changing that thing by taking up another variable in the memory, but that thing is transparent to the user, that thing is hidden from the user. It is doing it at the back end. Now back end में अगर वो कर रही है इस चीज को तो आपको वो चीज पता नहीं लगेगी, आपको वो लॉजिक मिस हो जाएगा. You will not be able to learn that logic, that how the things are working actually. तो इन केस अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, मुझे सीरियसली प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो आपको जो है स्टार्ट करना चाहिए सी लैंग्वेज से. व्हाई सी? बिकॉज इट इज सिंपल, it has got a shorter code as compared to Java or C Sharp or any other language. Secondly, it makes you a disciplined programmer. It helps you build your logic. Fourth thing is that it helps you build your debugging skills. It is quite important as I have been into this field for last 25 years. So it is equally important that you must be able to find out the fault with the code by just having a look at it. So unless you are able to debug it, unless you learn debugging, unless you try to find out fault with the code, you will not be able to learn the debugging. So it is quite important here. Fourth thing here is if I talk of speed, working as I told you that I will not be discussing the technicalities here, but since C language is very near to the system, very near to the computer, it is very easy for you basically that it is getting converted to the binary code very easily and it very fast. Another example I can give you here, another real life example that when I compare with C language with the Python. Let us say that Python is a mobile. Now, as you know, with the mobile has got a lot of features. When I say smartphone, it has come with a lot of features. Or in fact, we can take an example of a tablet also. A tablet has got a very good features. Anybody can use it. Anybody can become a computer tech savvy when using a tablet because you just have to use your fingers and press some buttons here and there, and you will be able to use that particular product. But it will be very difficult for you to make changes into that hardware. It will be very difficult when you have to add memory into it. It will be very difficult when you have to increase the resources in that tablet. But on the other hand, we can consider C language as a PC. You know, when I'll fall short of RAM in PC, I just add another slot. I'd use another slot and add another chip for RAM in that. So I can upgrade it. It has become more robust here. So when I say that technology changes very often, same is the case with the Python language. It is being written and managed by the open source by the community. So when community is managing it, there are a lot more changes coming into that language and very quickly. And not just Python language, technology is changing at a very fast pace these days. So every 2 years, the laptop, the tablets, they become obsolete, mobile phone becomes obsolete, and you have to buy a new phone. But when we are talking of when we are having a good configuration PC, we can upgrade it as and when we need, and it can last for a longer period. The same is the case with the C language.
The fundamentals that you build with the C language, they will last with you for the ages. After learning C language, there are other options that are available to you. You can upgrade to C++, you can upgrade to C sharp, you can upgrade to Java, you can upgrade to any other language. And even you can learn Python in few hours only. Another thing that I would like to discuss here is that, as I told you, that C language is very near to computers. Now, when I say that it is very near to computer, you can actually learn how to write code for computer, how to write code for devices, how to write code for microprocessor. आप ये सीख सकते हैं कि हार्डवेयर के लिए, किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए कोड आपने कैसे लिखना है, वो आप सी के अंदर सीख सकते हैं. You can, there is an option that is called interrupt handling in C or C++. Interrupt is something related to hardware. तो आप डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग द सी लैंग्वेज, बट दैट थिंग इज मिसिंग व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ जावा और व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ पाइथन. तो सी लैंग्वेज जो है, इट हैज गॉट, एवरी लैंग्वेज हैज देयर ओन प्रॉस एंड कॉन्स. बट सी लैंग्वेज, अगर अब मैं कहूं कि आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो बेसिक चीज मैं स्टार्ट करूंगा सी लैंग्वेज से. After spending time on C language, you can move to any other language. You can move to C++, you can move to C sharp, you can move to Java, you can move to Python. So any language can be learned after that. My suggestion here is that whatever language, see, I have given my own belief, what I believe, I have specified to you, whatever my experience I have shared with you, because I come across with the people with confused mind that which language should be opted. मेरा दोस्त तो पाइथन कर रहा है, मैं भी पाइथन करूंगा. मेरा दोस्त स्केला कर रहा है, मैं भी स्केला करूंगा. दैट काइंड ऑफ माइंडसेट आई एम गेटिंग. इवन पेरेंट्स आर आल्सो क्वेश्चनिंग कि बच्चा कौन सी लैंग्वेज करे, वो बहुत कंफ्यूज है. सो मेरा जो पर्पस था आज के वीडियो में, कि इस कंफ्यूजन को कुछ हद तक दूर करने का. अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आप किसी भी लैंग्वेज को बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं. अब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपना लॉजिक बिल्ड करना है, आपको अपने कुछ स्किल्स बिल्ड करने हैं, जैसे डेवलपमेंट का स्किल हो गया, जैसे प्रोग्रामिंग का स्किल हो गया. आपको बेटर प्रोग्रामर बनना है. यू हैव टू लर्न बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस. वो सारी चीजें सीखने के लिए आपको ऐसी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो आपको इन चीजों के लिए बाध्य करती है, फोर्स करती है. सी फोर्सेस दिस थिंग टू यू, enforces these things to you, but Python doesn't enforces these things to you. So Python simple है सीखने के लिए, बट ये क्योंकि आपको ये चीजें फोर्स नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं पे आप कुछ चीजें, फंडामेंटल चीजों को लैक कर जाते हैं, भूल जाते हैं, उनको सीख नहीं पाते. तो वो सारी चीजें सीखने के लिए my suggestion here is that you should start with C language. Though as per the compulsion, as per your environment, you may opt for any other language also to start with. ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग सिर्फ आप सी से सीख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं. लैंग्वेज से सीख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम है, हमारा जो है, हमें फंडामेंटल बिल्ड करने हैं. अब क्वेश्चन ये है कि आपने अगर मान लो सी शुरू करी या कोई लैंग्वेज शुरू करी, तो कितनी देर में आप सीख सकते हैं. देखिए, अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखी है, किसी भी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह सीखने के लिए अगर आप बिगिनर हैं, तो इट में टेक्स अप टू 6 to 7 months. बट अगर जैसे ही आप किसी एक लैंग्वेज में फ्रेश पूरा अडेप्टेबल हो जाते हैं, उसमें पूरा आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो दूसरी किसी लैंग्वेज को आप इजीली सीख सकते हैं. नाउ अब कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, बट माय सजेशन इज दैट जिस लैंग्वेज को भी आप चूज करें, उसको बहुत थॉरोली करें. ऐसा नहीं कि 15 दिन करी आपने पाइथन, फिर 15 दिन आपने स्केला कर ली, फिर 15 दिन जावा कर ली. तो पहले किसी एक लैंग्वेज को आप पूरा थॉरोली करें और उसके बाद ही दूसरी लैंग्वेज पे स्विच करें, ताकि दूसरी लैंग्वेज आपके लिए इजी हो जाए. नाउ दैट वाज ऑल द सेशन अबाउट टुडे. हो सकता है आपका कुछ कंफ्यूजन दूर हुए हों. यू कैन गेट बैक टू मी विद मोर क्वेश्चंस, and in case you have any queries, you can write down in the chat box. I'll try to answer to my best of my knowledge, or I'm waiting for your queries. Today's session, whatever was your suggestion, जो भी आपको जैसा लगा, आप अपने feedback हमें जरूर share कीजिएगा. In case you like my video, then do subscribe to my channel and also click the bell icon for the notification. So I'm still online here. I'm live here waiting for your queries.
Now, and there is one question, that is Python good for real world usage or Java if C is already done? Now, when I talk of real world situation, you have to understand that what type of real world situation you are talking about. तो आज की सिचुएशन में अगर मैं बात करूं जावा की, तो जावा इज गुड फॉर द एम्बेडेड सिस्टम्स इन केस यू हैव टू डेवलप द वेब एप्लीकेशन एंड इन केस यू हैव टू डेवलप द एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन. ऑन द अदर हैंड अगर मैं कहूं पाइथन की बात आपने करनी है, तो पाइथन इज गुड. पाइथन हैज गॉट अ लॉट ऑफ automatic. I said you that Python is a automatic scooter because it has got lot of automated code inbuilt into it. So when lot of automation code is there, it becomes easier for you to write the code. और जहाँ पे आपको टाइम की शॉर्टेज है, वहां पे आप पाइथन लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं. जहां पे आपको डेटा एनालिसिस की जरूरत है, जहां पे आपको मशीन लर्निंग के रिलेटेड कुछ प्रोग्राम बनाने हैं, वहां पे आप पाइथन को यूज कर सकते हैं. बट फॉर एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन आई विल सजेस्ट यू टू गो विद जावा. अब एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कैसे हम बनाते हैं, दैट इज समथिंग दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ टुडेज सेशन हियर. वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन सम अदर वीडियो ऑन सम अदर डे. There is another question that I am a fresher, 12th pass out. How long will it take for me to learn C language? Now, it also depends. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये भी जरूरी है कि आप कितना समय उस पर दे रहे हैं, कितना टाइम आपको डेली आप उस पर स्पेंड कर रहे हैं, और कितनी आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं. अनदर थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपका मैथमेटिक्स या लॉजिक कितना स्ट्रांग है. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको अपना लॉजिक स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है. अगर आपको जैसे सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो सी लैंग्वेज सीखने के लिए इट में टेक अराउंड 4 to 5 months. बट अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग है, तो यू कैन इजीली लर्न इट इन 2 to 3 months. What about machine learning? It is also popular. Now, machine learning is something that is a very vast topic and quite popular these days. But currently, it is the out of something that is out of scope of today's discussion here. Though I can suggest you that Python is something, a language that is to look for if you have to develop program for machine learning. But there are a lot more other things that you have to keep in mind while or learn or explore when you have to write program for machine learning based systems. तो मशीन लर्निंग अभी हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे. वी मे बी ब्रिंगिंग अप अनदर वीडियो based on the machine logic. Now another question is that how can I develop the logic? Logic is basically, I can suggest you that you can develop logic by practicing something related to the logical question. There are questions, there are markets में books available हैं reasoning की, mathematics की. Try to solve those questions to build up your logic. Internet पे बहुत से ऐसे साइट्स अवेलेबल हैं that does your IQ testing, logic testing. आप उन पे अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन टेस्ट योर करंट लॉजिक लेवल एंड हाउ टू. अगर बार बार आप उस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपका लॉजिक बिल्ड होगा. There is another similar question that what can we do to make our logic more strong? देखिए, एक तो ये मैंने बताया आपको कि आप जो है आप कोई बुक रेफर करें मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं. ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, जिससे आपका लॉजिक बिल्ड हो सकता है. अनदर थिंग, ग्रेट थिंग दैट गुड थिंग दैट यू कैन डू हियर इज कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है, तो फर्स्ट ब्रेक डाउन दैट प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम को तोड़िए. जब आप उस प्रॉब्लम को तोड़ेंगे छोटे छोटे हिस्सों में और उनको फिर अरेंज करेंगे कि कौन किससे रिलेटेड है, कैसे मुझे स्टेप बाय स्टेप किसको सॉल्व करना है, आपका लॉजिक अपने आप बिल्ड होना शुरू हो जाएगा. सो नेवर स्टिक टू अ बिगर प्रॉब्लम. ट्राई टू ब्रेक दैट प्रॉब्लम इनटू सिंपलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट. जब आप उन स्मॉलर पार्ट्स में उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ तोड़ के जब आप उसको लिखेंगे, तब आप अपना लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे. एक एक छोटे छोटे पोर्शन को आप सॉल्व करते जब जाएंगे, आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा. Any more questions? Okay, we'll share the details soon. We'll come up with the machine learning, data science,
and artificial intelligence session also. We'll be discussing about what are the things needed for them, who should be opting for those things. These days, everybody is after machine learning. Everybody want to learn machine learning. So we'll also discuss about who should be learning it. How can you learn that? What is the right way or process to make a logical program? Raghav, as I discussed here also, when we say that we have to create a logical program, first you have to understand a problem. जब आप एक प्रॉब्लम, क्योंकि क्या होता है प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम इज ये सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ओनली. आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है. जब आप उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, उस प्रोसेस के दौरान, उस अंडरस्टैंडिंग के दौरान आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में, मैंने बताया अभी कि आप ब्रेक करते जाए. जब आप ब्रेक करेंगे, ट्राई टू सॉल्व एन इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ दैट प्रॉब्लम. जब आप उस प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में बांटेंगे, मान लीजिए कोई बड़ी प्रॉब्लम है आपके पास, उस बड़ी प्रॉब्लम को जब आप कुछ छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले एक छोटे हिस्से को सॉल्व करिए. जब आप उस छोटे हिस्से को सॉल्व करेंगे, उसका जो भी आपका आउटपुट आया, उसका जो भी जो आपका नतीजा आया, उस नतीजे को एज अ इनपुट लेंगे आप दूसरे हिस्से में, सेकंड पार्ट में उसका, कि मेरा इतना हिस्सा सॉल्व हो गया, नाउ आई हैव दिस रिजल्ट, नाउ आई हैव टू यूज दिस रिजल्ट इन द सेकंड पोर्शन टू सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम. तो इस तरीके से जब आप करते जाएंगे तो आपका लॉजिक बनता चला जाएगा. ट्राई टू राइट डाउन दैट इंफॉर्मेशन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि मेरा ये इनपुट आ रहा है, मुझे ये आउटपुट जनरेट करना है, और उसके बाद आप उस आउटपुट को नोट करते चले जाएंगे और आपने क्या किया उन स्टेप्स को भी आप नोट करेंगे. जब आप उन स्टेप्स को नोट करेंगे कि मैंने क्या किया इस आउटपुट को जनरेट करने के लिए, वो आपके लॉजिक है, वो आपका लॉजिक है फॉर राइटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन. अनदर थिंग इज दैट अगर आपने चेक करना चाहते हैं कि आपने अपना लॉजिक सही लिखा है या नहीं, आफ्टर यू हैव रिटन अ प्रोग्राम, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम सही रिजल्ट नहीं दे रहा, तो उसमें भी यही तरीका होता है जिसको कि हम ड्राई रन कहते हैं. ड्राई रन का मतलब ये होता है कि आप उसके छोटे छोटे जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसमें एक डमी इनपुट पास करिए, और उस डमी इनपुट के बेसिस पे आपने जो आउटपुट एक्सपेक्ट किया और आपका प्रोग्राम किस लेवल पे क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है, उस आउटपुट को आप चेक करते चले जाइए. दिस यू डोंट हैव टू रन, दिस यू हैव टू ड्राई रन. मींस एक्चुअली आपने प्रोग्राम को रन नहीं करना, आपने उसके लॉजिक को चेक करना है स्टेप बाय स्टेप मैन्युअली सॉल्व करके. एनी अदर क्वेश्चन? So I hope there are no more questions here. So we end for the today's session. Or in case you like that session, do subscribe our channel and click the bell icon also to get the notifications regarding the future programs and future videos. Bye and have a nice day.